Hi everyone, welcome back to my channel 5 Minute Study. So today we are going to discuss animal tissue part 4. I'm sorry guys, मेरे से मैंने पहले गलत वीडियो अपलोड कर दिया गया था, but now I'm going to upload the current part which today we will discuss the animal tissue remaining types. Previous video we have cleared our epithelial tissue. Now today we are going to discuss connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue. So yeah, let's go on. So yeah, our second part is connective tissue. It provides structural framework, support and mechanical support. मतलब कि ये structure framework provide कराता है, mechanical support provide कराता है. Journal functions, the journal functions is binding, attachment and support. Bind करके रखता है, tissues को attach करके रखता है, support provide कराता है. Today the types of connective tissue is there are two types, aerodynamic tissue and adipose tissue. First type is aerodynamic tissue and second type is adipose tissue. Now the types of a connective tissue is also types. Aerodynamic tissue has three types, tendons, blood and ligament, and adipose tissue has two types, bone and cartilage. I am not going to discuss the aerodynamic and adipose tissue types because you all know these are the small things, but if you want to know about the tendons, so tendons, it attach muscle to bone. Tendons are attached with muscle to bone and it has a wide fibrous tissue. I am repeating again that it attached with muscle to bone and has a wide fibrous tissue. So now let's see the definitions of aerodynamic and adipose tissue. So now the first is aerodynamic tissue. Large amount of matrix present under skin, nerves, fill space between different tissues, organ, provide support, strength. एरोडीनामिक टिश्यू में मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होती है, स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, नर्व्स में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स के बीच में स्पेस को फिल करता है और स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू. बिलो द स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एक्ट एज ए स्टोरिंग फूड. स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, स्टोरिंग फूड की तरह एक्ट करता है. स्टोरिंग फूड से मतलब कि ये फूड को स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी द मस्कुलर टिश्यू. So this is our third type, which is the muscular tissue. Constitutes all muscles of body responsible in movement. It has muscle cells. ये बॉडी के मूवमेंट में मदद कराती है हमारी मसल्स. हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो मूवमेंट के ही रिस्पॉन्सिबल होती है और इसमें मसल सेल्स और फाइबर्स होते हैं. इनके टाइप्स थ्री टाइप्स हैं, कार्डियक मसल, स्ट्राइटेड मसल एंड अनस्ट्राइटेड मसल. अनस्ट्राइटेड मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. ओके, सो दिस इज द थ्री टाइप्स. नाउ लेट्स सी द थ्री टाइप्स. सो द टाइप्स आर, फर्स्ट इज अनस्ट्राइटेड मसल. इनवॉलंट्री इन नेचर, यूनिन्यूक्लिएटेड, स्पिंडल शेप प्रेजेंट इन लंग्स. लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, इनवॉलंट्री होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और स्पिंडल शेप के होते हैं. स्पिंडल मीन्स पिलर लाइक स्ट्रक्चर, जो पिलर होता है उसकी तरह. कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल शेप, uninucleated, involuntary, and it is only present in heart. Very important information that cardiac muscles is only present in heart and has cylinder shape, uninucleated and involuntary. And striated muscles are voluntary and present in neck, face or tongue, and it also help in movement. It means the muscular tissue and the types of muscular tissue. The main motto of muscular tissue is to help in movement. Okay, so now let's see the last topic, which is nervous tissue. So this is the nervous tissue, which is the last and final topic of this whole chapter tutorial. So which is nervous tissue, specialized type of tissue responsible for reception of stimuli, transmission of impulse to different parts of body. ये एक स्पेशलाइज टाइप की टिश्यू होती है जो कि स्टिमुलाई के रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इम्पल्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिशन करने के लिए हेल्प करती है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक. So with this we have completed our tissue
topic in which we have completed our plant tissue and animal tissue. And if you have not understand those topics, so go and check it out again, and do like, share, subscribe and my channel, and also press the bell icon to get latest notification from my channel. Stay home, stay safe, thank you. And also I have chosen the surprise, so फटाफट से इसको 100K तक पहुंचा दीजिए, and there will be a huge surprise for all my YouTube family. So hurry up, don't waste time, do it now. And I hope you all understand today's topic. So if you have not understand, so go previous ones, so go and check it out. I will provide the all three remaining parts link in the description, and the part 3 to 1 links I will provide in the description, so go and check it out. Thank you.